Hello, everyone, and welcome to another exciting session on of the School Innovation Marathon webinar series. We thank everyone, all the teachers, mentors, and students for giving the last video a very, very warm reception. And we had cost around 300 plus likes, 7,000 plus live views. So thanks a lot to all the teachers, students, and mentors for giving a warm reception to this webinar series. So based on the suggestions that we had in the last webinar, so we have a very interesting topic for our second webinar series that will be starting today. So we had a lot of queries among teachers, among students regarding how can we build drone related projects for our school innovation marathon. So for the same, here we are with the second webinar for school innovation marathon. We hope you are building projects, you're ideating, you're trying to find out special problem statements. And to help us delve into it better and understand how to actually make and build drone related projects, we have Dinesh. Dinesh is the co-founder of Drona Aviation. Dinesh, welcome to the Web School Innovation Marathon webinar series. So today's topic would be mostly focused on how we can actually explore about what drones are. Yeah, there is Dinesh's. Yeah, Dinesh, you'll have to unmute it yourself. Yeah, I Yeah, hi Dinesh. thanks So Sumit can we for have the inviting me. drone once again? Yes, we can even take off actually. Amazing. So today we'll be having we'll try to learn on how we can use drones to build projects related to the different themes of School Innovation Marathon. So thank you, Dinesh, for taking out time and spending out like your valuable thoughts on for all our teachers, students, and mentors who have joined today. So over to you, Dinesh. Yeah, thanks Suman for inviting me and all Niti Aayog and AM team. It is actually an honor for me to uh, doing this session for the especially for the students and teachers, and where things can innovate and the work you are doing, the AM team is really appreciating actually. And let me start with this. So till the screen gets shared, Dinesh, last time what we tried to do is that we tried to help the students on how we can actually take out a problem statement, like wow, like how we Correct. can actually build a winning project. Like we tried to delve deep into what actual problem solving is versus just going onto YouTube and just taking out a project and copying it. And what can be the process of actually going to the users, asking them for feedback, asking them for the problems, and then actually innovating. So that was our and in that same session, many of them had asked like, how can I use drones to build these kind of projects? Correct. So Yeah. that's what we are here actually, and that's why even drone aviation came into picture 10 years ago, and that's what we are doing. What you can innovate with the drones, not just not just because anybody can innovate, and everybody needs to be open to experiment. So that's what our aim is, and yeah, let's start, right? Yeah. So I'm Dinesh Sen, I'm co-founder of Drona Aviation. We design and manufacture drones for education, actually. And today we are not going to talk about us, but the innovating uh, innovating culture of our uh, Indian students. And so that's why we are here to. I'm going to tell you how, with my experience, how you can build some projects based on drones, especially for your school innovation mission, right? The school innovation marathon. And yeah, let's start it. First to introduce things with you, you might know about drones, right? So I hope most of you might be aware about the drones, right? What are drones actually? What kind of things you can build on? So what are drones? So drone is nothing but a
unmanned aerial vehicles, any aerial vehicle that can be controlled using, why not pilot not sitting there, but they can control it remotely, or it could be autonomous, and those things can be attacked. But yeah, so water drone is unmanned aerial vehicles, and there are different kind of drones, which are defined like fixed wing, which will all tell them as aeroplanes or aircrafts, right? Or RC planes. Then there are some lighter than air, which you might have seen some uh, baseball matches. There they use it for majorly for advertising. And then comes the multi-rotors. It could be a quad rotor, it could be hexacopter, it could be octocopter or more of that. But that depends on the what kind of application you are targeting, right? So yeah. So what kind of application we are doing currently being used drones for? Mostly. So I will be talking in Hindi and English because India is multilingual language country. So let's do that. Yeah, I think everybody have used this. That's the one of the application where drones being introduced in most of the countries, especially in India as well. बोलते कि शादी अभी जो होता है कि शादी अधूरी है बिना aerial cinematography के. 10 years back it was like and used to be a premium service, but now it's like any other cameraman जो आता है तो एक drone भी आता ही है, right? Then agriculture, you might have heard from last 3 to 4 years where our honorable PM used to say about promoting this application of drones, Kisan drones, agriculture can be used as a spraying on those spraying in agriculture farms. Then obviously defense, where from where it started earlier to bombard things using the drones, right? Then obviously, then the next thing which is coming up right now is the logistics, right? So where you can deliver one thing from one place to another. Like if you have read recently that in Bangalore, Bangalore airport has tie up with one of the company to transfer the passengers from the Bangalore airport to the main city, Bangalore itself, because it's a very crowded place. It takes around 1.5 to 2 hours, so that logistic is one thing, but the passenger, the air taxi thing. So that is kind of another application people are working on it right now. And obviously surveillance in today's terms, you might have heard about that's very necessary in where countries are kind of like at the verge of war. So that is also one of the main application. And then mapping, which I really like in most of out of those six. The mapping is one of the thing which I really like because that gives you the analysis of about your crop, about your land. So you can take out those data and analysis and analyze that and use it for your future, right? So that. But what could be the next drone future applications? And now that's what you need to think about this in this particular marathon. How you can use your drone, what you can do with your drone, where you want you to use your drone that can be useful for the society, for your country, for your school even. How you can use that drone depending on the what kind of drone you are using, right? So the future drone application could be like one of the war going on Ukraine and Russia. People are using kamikaze drones, right? So that could be even those are destructible application, but the useful applications are also there where you can understand about the environment using drones. You can get internet connectivity using drones, which Meta is trying in some of the remote areas. Uh, so those kind of application you can work on, and depending on the theme you have. Based on Viksit Bharat theme, in one of the theme of the social innovation marathon, so there you can actually use drone in all of those themes as well. That we will like come out in a later stage of our session.
But yeah, so meanwhile, when I am going through this session, just think of how you want to use your drone for future. It could be a simple thing like asking someone to come here, just delivering a small message like come here. Say if that guy is not able to hear, right? So you can just show a message and you don't need to text him using a smartphone. So yeah, you can use a drone as well. So it could be a simple because the big innovations happen after when you try a small, funny, relatable things, right? The feature, the drone delivery you are doing, but the first stage could be a small dropping of a sugar cube in your coffee, right? So that is also a drone delivery. But you start with a small step and then you reach out to a delivering the medical appliances to a remote hilly areas 40, 50 kilometers away, right? So yeah. So to work on those drone-based projects, so I kind of follow those sometimes, most of the time, not sometimes, but most of the time when we have an intern who was working on some of the applications where he can have a small project on drone. So these are the 6 steps which we follow. Like first of all, define the project, define the purpose, define the project, right? So I will just go through that, then we will uh, talk on them on detail as well. So define the purpose, then design the drone, then select the component of your drones, then assemble it, then program the drone if required, and then test, and then it will be iterate because you might not achieve what you wanted to do, so you need to iterate, right? So the step is define the purpose. Why what your drone want to need to achieve. What is the purpose of why you are making this project, right? The project goal, what are your goals, what you want finally to achieve your drone to be, which problem statement you are solving, like in uh, the SIM, the School Innovation Marathon, you choose one of the theme. I think last session was some based on that only, like how you choose your project. So theme, then the what kind of project you will do, right? So you come out, you define your define goal for your project, right? Then comes the design of drone. Here, design of drone doesn't mean to draw the sketching or those kind of things, but the define specifications for your drone. Like to achieve that purpose, what specification of drone need to be. Like say if you want to deliver a drone from one place to another of a 5 kg payload, so you need to define that my drone should be able to carry that 5 kg payload. If I want to carry a human from one place to one, then the payload capacity need to be like 70 kg, 80 kg, right? So what should be my weight of the drone? Because here the regulations comes also in the picture, like what kind of drone, because uh, like DGCA, who is governing body of our for drones here in India, defined drones based on the weight only. So drones weigh less than 250 grams are nano drones, then 250 to 2 kg are macro drones, then medium, then small, then large drones, right? So you need to define specifications for your drone कि कितना weight होगा, कितना flight time होगा, payload capacity क्या होनी चाहिए, उसमें मॉड्यूलरिटी क्या होनी चाहिए कि हाँ मैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ क्या. Yes. Sorry, just having a doubt, Yeah. Dinesh, like Yeah. मुझे बस एक थोड़ा सा और इजी टर्म्स आप बता सकते हैं कि पेलोड कैपेसिटी क्या है, फ्लाइट टाइम क्या है ड्रोन्स के Okay. साथ, Okay. Sir. अगर थोड़ा सा सिंपल में Yeah. अगर आप बता. हाँ, सो पेलोड कैपेसिटी वो हुआ कि ड्रोन खुद के वेट जो उसको खुद को उड़ने के लिए चाहिए उसके अलावा एक्स्ट्रा वेट कितना ले सकता है. जैसे लिफ्ट का होता है, लिफ्ट का खुद का एक वेट होता है पर उसके आगे फिर वहां पे लिखा हुआ होता है 1068 kg पेलोड कैपेसिटी. तो दैट इज कि हाँ इतना वेट इंक्लूडिंग जो भी इंसान वहां पे बैठ खड़े होने वाले आदमी और औरत, तो उनका टोटल वेट कितना हो सकता है, जो इसलिए वो डिफाइन करते हैं कि हाँ 8 8 पर्सन ही अलाउड है, राइट. उसकी ज्यादा होगा तो वो ओवर वेट बता देता है, राइट. तो सेम वे दैट इज द पेलोड कैपेसिटी. फ्लाइट टाइम इज कि उसमें वो ड्रोन कितने टाइम तक उड़ेगा.
टोटल कितना टाइम उड़ेगा। तो अभी यहाँ पे वेट वाइज भी डिफाइन होता है कि मेरा जब मैं मेरे कोई भी पेलोड, जीरो पेलोड, एक्स्ट्रा पेलोड मैंने लिया है, तब मेरा फ्लाइट टाइम कितना है। और मैं अगर एक्स्ट्रा पेलोड ले लूंगा कि हाँ मैंने अभी 2 किलो और उठा लिया, तो ऑब्वियसली फ्लाइट टाइम कम होगा, क्योंकि अभी उसको वो 2 किलो उठा के उड़ना है, क्योंकि एयर ड्रोन नीड टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वो उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि हाँ कितना वेट के साथ उड़ रहा है, उसका वेट कितना है, राइट। अभी एंड मॉड्यूलरिटी जनरली है ये कि फ्लाइट कितना पेलोड होना चाहिए ड्रोन के लिए, लाइक इज इट डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन या फिर दैट लाइक? विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन एप्लीकेशन। कि कुछ एप्लीकेशन में मतलब पेलोड की जरूरत ही नहीं है, राइट। कि जैसे मान लो कैमरा ड्रोन ही है, उसमें जैसे कैमरा को मुझे ट्रैक करना है कि हाँ एक बंदे के पास से हथियार है कि नहीं, राइट। तो वो कैमरा से प्रोसेस करेगा, उसके बाद मुझे पेलोड होने की जरूरत ही नहीं है। तो वो उसके साथ फ्लाइट टाइम जितना देर मुझे सर्वेलेंस करना है वो मैं करता रहूंगा, उतना फ्लाइट टाइम मेरा होना चाहिए। फिर मॉड्यूलरिटी आ गया कि मैं उसमें ड्रोन प्रोजेक्ट में ये जरूरी है कि हमें उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड, कुछ सेंसर ऐड करना चाहता हूँ क्या। तो उसकी बेस पे वो तुम्हें डिफाइन करना होगा कि मॉड्यूलरिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है मेरे पास, राइट। कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा पेलोड में ऐड करने के लिए कुछ मुझे जगह चाहिए कि नहीं। देन कम्स प्रोग्रामेबिलिटी। ये जो जनरली मॉड्यूलरिटी और प्रोग्रामेबिलिटी ये फ्लाइट कंट्रोलर के लिए बेस्ड है कि हाँ मुझे मैं मेरे ड्रोन को प्रोग्राम कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्ट अगेन इफ इट्स इम्पोर्टेंट और नॉट। क्योंकि अगर सिंपल से कि जो मैंने एक एप्लीकेशन बताया कि हाँ मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं अभी मैं इस पे जस्ट एक मैसेज, जैसे इसी ड्रोन पे मैं एक मैसेज लगा के उड़ा सकता था, पर उसके लिए मुझे प्रोग्राम करने की ड्रोन को जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि अगर मैं मैनुअली उड़ा रहा हूँ या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा सेंसर भी नहीं काम कर रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रोग्रामेबिलिटी या और भी जो स्पेसिफिकेशंस आप डिफाइन करो सेकेंड स्टेप पे कि भाई क्या किस तरह का आपको ड्रोन अचीव करना है। देन कम्स की सिलेक्ट। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टेप, तो आपको अभी कंपोनेंट्स सिलेक्ट करने होंगे। तो ड्रोन में मेजर कंपोनेंट्स होते हैं द मोटर्स which will rotate, right, and the propellers, जो कि मोटर उसको प्रोपेलर को घुमाएगी, जिसकी वजह से थ्रस्ट जनरेट होगा एंड जिसकी वजह से ड्रोन उड़ेगा। एंड मोटर और प्रोपेलर को घुमाने के लिए क्या चाहिए, पावर, दैट इज कम्स फ्रॉम द बैटरी। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन को जनरली बोलते हैं प्रोपल्शन यूनिट। तो जो ये अपना कितना थ्रस्ट प्रोवाइड करने वाला है, दैट विल डिपेंड ऑन दोज 3 कंपोनेंट्स। कि मेरा बैटरी कौन सा है, मेरा मोटर कौन सा है, मेरा प्रोपेलर कौन सा है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को का बहुत इंपॉर्टेंस है। देन कम द फोर्थ कंपोनेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवन फ्लाई अ ड्रोन, अगर पेलोड हो या नहीं हो, दैट इज फ्लाइट कंट्रोलर, दैट्स द ब्रेन ऑफ द योर ड्रोन। तो वो कैसा है, जो मैंने पिछले स्टेप पे बताया कि वो प्रोग्रामेबल है क्या, या उसमें मैं और भी सेंसर ऐड कर सकता हूँ क्या। जैसे आर्डिनो होता है, आर्डिनो बनाई उसके लिए कि हाँ उस पे और भी सेंसर्स ऐड कर सकते हो, उसको प्रोग्राम करना भी इजी है, वो सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ और क्या क्या उसमें जरूरत है मेरे एटलीस्ट उस काम के लिए। तो यस, चौथा, तो वैसे कंपोनेंट्स, तो बाकी तो पांचवा कंपोनेंट दैट इज फ्रेम ऑफ द ड्रोन। सो दैट यू कैन डिजाइन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस एंड बहुत सारा वो डिपेंड करेगा, पर हाँ ये जो मेजर 4 कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोर्थ स्टेप पे आता है कि जब आपके कंपोनेंट सिलेक्ट हो गए कि हाँ मेरे पास अभी सारा आ गया, कंपोनेंट सिलेक्शन में एक और जो चीज मैं मिस किया दैट इज कि अगर आपने किया है कि मेरे ये फीचर होना चाहिए, जैसे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस होना मेरे में जरूरी है, या फिर मुझे कुछ ड्रॉप करना है, तो वो वाले कंपोनेंट्स भी कि हाँ मैं ड्रॉप के लिए क्या कंपोनेंट यूज करूंगा, कुछ सर्वो यूज करूंगा या नहीं, या फिर मैं ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए कौन सा सेंसर यूज कर सकता हूँ, आईआर करूंगा या नहीं। तो वैसे और उन पे भी कि हाँ मैं आईआर उस फ्लाइट कंट्रोलर में इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या। तो वो सब क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे, तो आप अगर स्टेप वाइज जाओगे तो वो क्वेश्चंस आंसर करना इजी रहेगा। बाद में सारे कंपोनेंट्स आपके पास आ गए, तो उसके बाद कि आपको ये ड्रोन असेंबल करना है। तो असेंबल में वही कि आपको प्रॉपरली मोटर, वो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करके आप कौन सा मोटर फ्लाइट कंट्रोलर में कहाँ लगाओगे,
प्रोपेलर्स कैसे लगाओगे, क्योंकि सबका एक स्पेसिफिक तरीका होता है। यू कांट डू कि यहाँ पे प्रोपेलर, कौन सा भी प्रोपेलर लगा दिया, वो भी नहीं कर सकते। बैटरी का कनेक्शन करते वक्त इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि भाई उल्टा नहीं लगा दिया। तो वो असेंबल कर तो जनरली आप अगर आप ढूंढना तो बहुत सारे आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो वो असेंबल करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोग्रामेबल, अगेन प्रोग्राम द ड्रोन, कि वो डिपेंड करके आपके, अगेन कि वो गोल क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो उसमें अगर प्रोग्रामेबिलिटी की जरूरत है क्या, तो वो आप प्रोग्राम तो जनरली, कोई भी प्रोग्राम अगर कोई करता है, ड्रोन हो या कुछ भी, तो अगर एक लॉजिक आप क्रिएट करके रखोगे तो वो बेटर होगा कि हाँ, अब जिसको हम लोग सूडो कोड भी लिखते हैं, कि हाँ वो प्रोसेस क्या होगा, कि हाँ मेरा कहाँ से मैं वैल्यू, अगर जैसे आईआर का है तो मैं आईआर की वैल्यू कहाँ पे डिफाइन करूंगा, तो उसका मेरा कंडीशन क्या होगा कि हाँ वो वैल्यू आ जाए तो मैं क्या पिच हो जाना चाहिए या रोल हो जाना चाहिए, पिच फॉरवर्ड होना चाहिए, कितना होना चाहिए। वो एक सूडो कोड अगर फ्लो डायग्राम की तरह आप बनाएंगे तो देन आपको इजी रहेगा। और बीच बीच में आप वो डिबगिंग मेथड्स भी यूज करें कि हमें वैल्यूज लिखता जाऊं, ताकि मैं प्रोग्राम को मेरे को बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा एक एक। और जितना ज्यादा ब्रेकअप करके आप करोगे, जैसे यहाँ पे अपने पूरे प्रोसेस को ब्रेकअप किया है कि goal define, design, select components, assemble the drone and program and test, तो वैसे ही आप प्रोग्राम अपने कोड को भी वैसे ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड अभी आजकल बहुत इजी इजी वे भी प्रोग्रामिंग के आ रहे हैं, जैसे ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो उसमें आपको एकदम 1000 लाइन कोड की नहीं लिखनी है, पर हाँ लॉजिक आपको, क्योंकि मेन वही है कि आपको लॉजिक बिल्ड करना है कि आपको, कोई कि टूल्स बता प्रोग्राम। सकते हैं दिनेश आप ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग के भी, लाइक ड्रोन्स में जिसमें यूज कर हाँ सके? हाँ, तो जैसे एक वन ऑफ द प्रोग्राम हमारा खुद का ही है, प्लूटो ब्लॉक्स है। जैसे स्क्रैच जनरली लोग यूज करते हैं आर्डिनो वगैरह के लिए, स्क्रैच हो गया। तो वो उनमें क्या होता है, वो ब्लॉक्स में ही यूजर के लिए सिर्फ वो ब्लॉक है, पर पीछे पूरा प्रोग्राम होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक ब्लॉक को असाइन किया हुआ। जैसे कि पिच फॉरवर्ड का एक ब्लॉक हो गया, पर पिच फॉरवर्ड पिच यूजर के लिए तो यूजर को पता है कि कितने स्पीड से वो कराना है, पर बैकएंड पे वो पूरा प्रोसेस हुआ कि हमें कौन सा मोटर का कितना वैल्यू होगा, ताकि वो यूजर को नहीं करना पड़े। राइट, तो वो ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम वहाँ पे डिफाइन किए हुए होते हैं, कितना आगे जाना चाहिए कितना पीछे, तो वो वैसा। तो ब्लॉक बेस्ड जनरली इस जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, इवन ड्रोन हो या कुछ भी, तो वो इजी रहता है, क्योंकि वो, नहीं तो कोडिंग लैंग्वेज तो क्या है, चेंज होती रहती है, पर वो लॉजिक बिल्डिंग इज नेसेसरी। तो आपको वो वैसे थॉट कर पाओगे कि हाँ मेरा, जैसे रीजनिंग का इसलिए लोग जनरली टेस्ट करते हैं कि क्या लॉजिक बिल्डिंग कैसा है, वो थॉट कैसा है बच्चे का या फिर किसी का भी। तो सिक्स स्टेप है उसी में कि टेस्ट एंड डायरेक्टेड, अगेन कि अभी ये ड्रोन है तो यू नीड टू फ्लाई इट, एंड फ्लाइंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि फ्लाइंग से ही तुम्हें बाद में पता लगेगा कि ये मेरा ड्रोन उस तरह से काम कर रहा है कि नहीं। एंड आपका प्रोग्राम भी आप उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे कि हाँ मेरा ये काम नहीं कर रहा, तो फिर मैं फिर से टेस्ट करूंगा। तो ये टेस्ट एंड आइट्रेशन स्टेप विल एक्चुअली गो ऑन एंड इसी में आप, हो सकता है आपको पीछे बैक स्टेप जाके प्रोग्राम को फिर से, ड्रोन को फिर से प्रोग्राम करना पड़े, तो प्रोग्राम को आपको चेंज करना पड़े, तो वो इम्पोर्टेंट है। सो यस, ये, सो बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी एक्चुअली वी, one of our student actually worked, his name was Dhruv, so Dinesh, उसने there have been kind a of, few questions. So if you don't mind, yes like, yes, can we take, because there have been like 5 to 6 questions. I don't want okay okay, great great, the yeah yeah, students to miss out. So if that it would is be better. possible, like 2 or 3 questions, if we can take. These are all Yes yes, related to the the 6 steps that you spoke. okay One okay. of the very important question is that like why is the electronic ESC that you told, electronic speed controller, why is it important in this, and what role does it play? So that is required to drive the brushless motors. So there are different kind of motors. So in generally in bigger drones, people use brushless motors because those are efficient and give better thrust than normal DC motors which you use for car and those things. Uh, but हाँ, छोटे drones के लिए people use brushed coreless motor, जो कि ये इस drone में भी use हुआ है, right? So these are brushed coreless motor. For those we don't require ESC.
पर ब्रशलेस के लिए ईएससी रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वो पीडब्ल्यूएम पे वर्क करता है, तो वो स्विचिंग के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ताकि उसको मैं प्रॉपरली उसको प्रॉपर करंट प्रोवाइड कर सके और घुमा सके, तो इसलिए इज काइंड ऑफ ए मोटर ड्राइवर इन शॉर्ट। ओके, थैंक्स लॉट। और और एक क्वेश्चन जो आ रहा था वो था कि कितना आरपीएम होता है जनरली ड्रोन का मोटर, लाइक इज इट टू हाई, लाइक इज इट 120 150 लाइक अ वीओ मोटर, इज इट नहीं, वेरी? 150 नहीं, उससे भी काफी ज्यादा होता है। सो अगर ये छोटे मोटर की बात करें तो जैसे इसका आरपीएम विदाउट लोड मतलब कि बिना प्रोपेलर के अगर मैं 3.7 वोल्ट पे घुमाता हूँ तो इट गोज मैक्सिमम ऑफ 50,000। पर अगर मैं ये प्रोपेलर के साथ जाता हूँ तो ये मैक्सिमम 22,000 तक जाता है। और जो बड़े मोटर्स है उनका जैसे आरपीएम होता है, तो वो अगर जैसे हेक्साकॉप्टर जो आपने जनरली स्मॉल ड्रोन की बात करते हैं जो इस साइज का होता है, जो मतलब माइक्रो ड्रोन में आता है, जो जनरली शादियों में उड़ता रहता है, वो मोटर्स वहां पे मोटर्स जनरली ना 900 केवी की यूज होती है। केवी मतलब 900 आरपीएम पर वोल्ट। सो इट्स 900 इंटू अगर 3S बैटरी यूज कर रहे हैं दैट इज अराउंड 12 वोल्ट। सो वो 10,000 आरपीएम तक चला जाता थैंक्स अ लॉट। एंड एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, प्लीज कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस। हम अगर अभी नहीं तो हम लास्ट में सबका क्वेश्चंस एक साथ लेंगे। है। करेक्ट, करेक्ट। वन क्वेश्चन दैट हैज कम अप इज दैट कि लाइक इफ आई गो इनटू द मार्केट व्हाट शुड आई टेल द पर्सन कि मुझे ड्रोन का मोटर चाहिए या ड्रोन का बैटरी चाहिए, या फिर क्या बोलना चाहिए, लाइक व्हाट इज दैट बैटरी कॉल्ड और व्हाट इज दैट मोटर? नहीं, उससे पहले आपको वो जो भी कंपोनेंट है उनका स्पेसिफिकेशंस को समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जैसे बैटरी जनरली चलती है इसके लिए लिपो बैटरी। और अगर किसी को जाके लिपो बैटरी भी बोलेंगे ना तो वो कोई भी, क्योंकि लिपो आजकल बहुत जगह यूज होता है, लिपो और लिथियम आयन। तो लिथियम आयन लोग आपको आपके ब्लूटूथ हेडसेट में भी होता है, आपके लैपटॉप में भी होता है। पर आपको ड्रोन बैटरी के नाम से भी आई थिंक इतना मार्केट में इतना पता नहीं है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो तब भी हम ड्रोन बैटरी के नाम से मांगते थे, तो लोग वो ब्लूटूथ की बैटरी है। क्योंकि यहाँ पे जैसे बैटरी का ही बात करें तो बैटरी काफी डिस्चार्ज करंट काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा मतलब जैसे छोटे ड्रोन में ही 2 एम्पियर तक चला जाता है, तो बड़े ड्रोन में है ना जो 30-40 एम्पियर आराम से रिक्वायर्ड होता है, तो वो बैटरी उतना पावर देना चाहिए। तो वहां पे आपको स्पेसिफिकेशन, जैसे बैटरी का स्पेसिफिकेशन हो गया कि एक तो वो वोल्टेज कौन सा है, सो थ्री कितने सेल वाली बैटरी है, प्लस मेजरली मेजरली उसमें डिस्चार्ज करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हो गया। मोटर में जनरली आरपीएम इज वन ऑफ द, जो आरपीएम केवी रेटिंग बोलते हैं, केवी रेटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर दैट। और वो कौन से, फिर इन दोनों तीनों का कंपेटिबिलिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि हाँ मेरी मोटर में 3S मतलब थ्री थ्री सेल्स ऑफ थ्री सीरीज ऑफ सेल्स वाला बैटरी यूज कर सकता हूँ, दैट इज 12 वोल्ट। तो मेरा मोटर शुड सपोर्ट दैट 12 वोल्ट वाला। अगर मैं मोटर ही मेरा 2S मतलब 7.4 वोल्ट है और मैंने बैटरी लगा रही 12 वोल्ट की, तो आपको कुछ जलने की आवाज स्मेल आ सकती या है। हाँ तो वो आता रहता है, वो राइट। इम्पोर्टेंट है। तो ईएससी भी वैसे ही, कि अगर मोटर मेरी 30 एम्पियर तक, अगर मेरा पूरा ड्रोन अगर 30 एम्पियर तक खींच, सॉरी मोटर 30 एम्पियर तक खींच सकती है, तो मेरा ईएससी उतना प्रोवाइड करना चाहिए, वो नहीं 15 या 10 एम्पियर पे होना चाहिए। ये तो फिर से आपको एक और धमाके जो हमारे साथ हुआ भी था एक स्टूडेंट के साथ, कि हाँ। ईएससी फट गया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है, एंड एक और कनेक्शंस एक कैसे लास्ट करना। अगर हम क्वेश्चन बस ले ले हाँ। फॉर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। वन स्टूडेंट इज टेलिंग दैट आई हैव अ प्रोजेक्ट इन व्हिच आपने कंपोनेंट में बताया कि कैमरा इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स एंड सर्वेलेंस में बहुत सारी। तो कैमरा लाइक व्हाट इज जनरली अ प्रोसीजर, लाइक वी कनेक्ट अ कैमरा टू अ रास्पबेरी पाई, बट इज इट सिमिलरली इट कैन बी कनेक्टेड टू अ ड्रोन आल्सो, और इज देयर अ डिफरेंट प्रोसीजर? सो दैट डिपेंड्स अगेन द एप्लीकेशन क्या है, कि सिर्फ अगर मुझे उसका देखना है, व्यू देखना है मेरे, तो फिर क्या है कि सिर्फ जो कैमरा इज इनफ, कैमरा एंड जो मेरा ट्रांसमीटर होगा, जो भी वीडियो ट्रांसमीटर, एंड जो मेरे लैंड पे वीडियो रिसीवर। सो वो इम्पोर्टेंट है। देन आपको उसको रिजोल्यूशन क्या चाहिए, कहाँ से आप देखने वाले हो वहां से प्रॉपर दिखेगा, तो वो अगेन रिजोल्यूशन वाला पार्ट आ जाता है, कि हाँ मेरे को 5 मीटर से क्लियर दिखता है, पर उस कैमरा में हो सकता है, क्योंकि ड्रोन तो आप उड़ाओगे तो कम से कम भी तो 20-30 मीटर उड़ाओगे, तो वहां से मुझे चीजें पहचान में आएगी या नहीं आएगी।
सो वो एक इम्पोर्टेंट, तो वो थैंक अगर यू। आपको फ्लाइट कंट्रोलर से इंटीग्रेटेड चाहिए कि हाँ मेरा मेरे कैमरा के व्यू के हिसाब से मेरा ड्रोन बिहेव करना चाहिए, जस्ट लाइक कि लोग बनाते हैं कि है ना, जो मैं आपको तो आपको डिटेक्ट किया तो उसके हिसाब से मेरा ड्रोन मूव कर रहा है क्या, जो अगर DJI के ड्रोन में आप वो देखते हो कि हाँ फॉलो मी, या फिर मेरा फेस को मेरे को सेंटर में रखेगा हमेशा ड्रोन, तो वो क्या वहां पे प्रोसेसिंग पावर उसमें होनी चाहिए। तो वो आप एक्सटर्नल भी ऐड कर सकते हो कि ड्रोन तो कैमरा को आप सिर्फ एक डेटा इनपुट के लिए यूज करोगे, फिर प्रोसेसर एक होगा वो जो फ्लाइट कंट्रोलर से बात करेगा। अभी कुछ लोग उसको ऑन बोर्ड भी करते हैं और सेम प्रोसेस लोग ऑफ बोर्ड भी करते हैं, जहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेशन पे आपको व्यू आएगा पहले, फिर आप ड्रोन को कमांड्स भेजेंगे, जो भी प्रोसेसिंग होगी वो ग्राउंड पे होगी। थैंक यू दिनेश, थैंक यू फॉर लाइक ये इतना डिटेल में आई थिंक स्टूडेंट्स को हार्डली कभी नॉलेज मिलेगा, एंड आई सी लाइक मोर देन 150 people are joining us online. So guys, if you want this video to reach more people, please hit the like button also. Yeah. And yeah, sorry Dinesh, sorry for interrupting in between this, that the questions were coming in flow, कीप so I कीप thought कीप इंटरप्टिंग मुझे। yeah, yeah, thanks, yeah, we can move ahead, thanks. Yeah, so based on this steps, so one of our student actually really worked on this 6 step process, जो उसने एक मीथेन सेंसिंग ड्रोन बनाया था। तो सॉरी, हाँ, ये देवना डंपयार्ड यहाँ पे मुंबई में एक डंपयार्ड है जहाँ पे ऑल द कचरा वहाँ पे आता है। और तो उसमें क्या है, कचरे की वजह से मीथेन गैस निकलती है, जो कि जिसकी वजह से बीच बीच में डंपयार्ड में आग लगती रहती है। तो उसका आइडिया था कि जब भी वो ड्रोन्स पे थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तो उसका आइडिया है कि है ना, जो मैं मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे डिटेक्ट करूंगा कि कहाँ पे ज्यादा है, ताकि फायर डिपार्टमेंट के पीपल वहीं पे जाके जो भी प्रोसेस हो वो करे या फिर आग बुझा दे, ताकि उनको ऐसे ढूंढने की जरूरत, क्योंकि वो जनरली कचरे में अगर आग लगती है तो फिर फैलना काफी इजी हो जाता है। तो उसने वही अपना पर्पस डिफाइन किया, द गोल डिफाइन किया कि हाँ ऐसा ड्रोन हो जो मीथेन कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करे। देन द सेकेंड वन कि हाँ, उसको जो अपना पार्ट आता है कि डिजाइन द ड्रोन, तो उसमें क्या उसका इस पे कि हाँ मैं वहाँ पे मीथेन सेंसर ऐड कर पाऊँ इजीली, मैं थोड़ा प्रोग्राम कर पाऊँ, वो उसकी रिक्वायरमेंट थी। तीसरा फिर उसने वो सिलेक्ट कंपोनेंट किया, तो उस वक्त हमने प्लूटो एक्स किट लॉन्च किया था, तो उसने वो लिया क्योंकि वो प्रोग्रामेबल था, मॉड्यूलर था। फिर उसने मीथेन सेंसर उसमें ऐड किया, राइट, तो फिर वो असेंबल किया, एंड उसने प्रोग्रामिंग की क्योंकि उसे इंटीग्रेट करना था, एंड उसकी वजह से वो ड्रोन वो बना पाया था। और ऑब्वियसली वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ही था, तो इट वर्क कि हाँ, उसने ऑब्वियसली देवयार्ड डंपयार्ड तो नहीं गया था, पर वो घर पे ही मीथेन कहाँ पे मिल सकता है, इन द काउ डंग, और वहां पे तो ही टेस्टेड दैट ड्रोन देयर, and it was a good project, at least for the student, and he was a eighth grade student, तो काफी काफी यूजफुल था वो। और वहां से पता वहाँ वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर अस कि हाँ कैसे पुश कर सकते हैं कि हाँ बच्चे कहाँ से आइडिया लाते हैं जो अपन भी नहीं सोच सकते। सो बट एज यू से, दिस इज अ ड्रोन, एंड इट्स नॉट, मतलब इतना जैसे नॉर्मल आप कार वगैरह बनाते हो वैसा इजी नहीं है। So you need to be take care of some things, your safety and regulation, whatever the regulations in your country, in our country, that is India। तो वहाँ पे प्रॉपर आपको जैसे ड्रोन है तो आपको प्रॉपर फ्लाइट प्री फ्लाइट चेकलिस्ट आपको बनानी चाहिए कि हाँ मेरा प्रोपेलर सही है ना, मैंने बैटरी चार्ज कर ली क्या, मैंने प्रोपेलर सही लगाए है ना, कुछ टूटा हुआ नहीं है ना, कुछ चीज नहीं है ना जहाँ से मेरा ड्रोन को वाइब्रेशन मिले। तो वो हर एक फ्लाइट में अगर वो प्री फ्लाइट चेक्स आप करोगे तो आपका, और इवन असेंबल के वक्त भी, तो आपका ड्रोन का प्रोजेक्ट इजी रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे आप जब फ्लाई करोगे, अगर प्री फ्लाइट चेकलिस्ट आप टिक नहीं करोगे तो क्या है कि अगर हो सकता है आपने कुछ गलत लगाया, या फिर बैटरी चलो मान लो चार्ज अच्छे से नहीं की है, और आप एक हाइट पे उड़ा रहे हो सडनली, अगर उसमें फीचर नहीं है कि भाई बैटरी कम हुआ तो वहीं पे लैंड कर, तो हो सकता है वहीं पे ड्रोन गिर जाए, तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव भी हो सकता है और किसी की सेफ्टी के लिए भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये प्री फ्लाइट चेकलिस्ट फॉलो कर बनाना एंड फॉलो करना बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा ऑब्वियसली कंट्रोल समझना है कि हाँ फॉरवर्ड कैसे जाएगा, बैकवर्ड कैसे जाएगा, राइट लेफ्ट, वो पहले से एक आप जो भी आपका टेस्ट एंड आइट्रेट वाला
स्टेप था, उससे पहले आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर सम सिमुलेटर्स आल्सो अवेलेबल, सो उससे आप समझ सीख सकते हो थोड़े बहुत कि हाँ कंट्रोल मतलब सिमुलेशन और इसका डिफरेंस आएगा, पर फिर भी यू विल हैव अ प्रैक्टिस कि हाँ मेरे को फॉरवर्ड कैसे करना है, बैकवर्ड है, ताकि आपका एक तो एक्सपेंस भी प्रॉपर मतलब ज्यादा नहीं हो कि अगर क्योंकि क्रैश होता ही है ड्रोन। क्योंकि कार की जैसे नहीं है कि कार आपने कोई रोबोट कार बनाई, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हो, ज्यादा ज्यादा जाके आगे जाके भिड़ के रुक जाएगा। पर ये ड्रोन है तो वो कहीं भी इधर उधर जाके आपको आंख में लगे वगैरह, तो प्रॉपर से प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह वो सब आप यूज करें तो बेटर रहेगा। एंड इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से ये ऐसे फ्लाइंग जोन्स सेटअप है, तो यू यू कांट फ्लाई इन रेड जोन्स। एंड इंडोर में थोड़ा फ्लाई कर सकते हो पर वो भी लिमिटेड में। अ, What is पर this हाँ red अगर zone, बाहर, yellow zone और green zone? क्या डिफरेंस, क्या 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 like एग्जांपल हाँ अगर आप। तो रेड जोन जनरली एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के एरिया को डिफाइन किया है, और जो थोड़े सेंसिटिव लोकेशंस है लाइक बार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया या फिर पार्लियामेंट हाउस हो गया, या तो इस तरह के जो और भी डिफाइंड है, वो आपको एक एक्चुअली एक डिजिटल स्काई करके ऐप वेबसाइट है और ऐप भी है आई गेस, तो वो गवर्नमेंट की है, वहां पे आप चेक कर सकते हो कि आपका लोकेशन किस जोन में आता है। तो येलो जोन में आपको परमिशन लगती है, रेड जोन में तो यू कांट फ्लाई, मतलब अलग ही लेवल की परमिशन लगती है वैसे। येलो में यू कैन जस्ट फ्लाई, ग्रीन में यू कैन फ्लाई टिल 400 फीट, एंड ये तो वैसा तो यू नीड टू फॉलो रेगुलेशंस, वो बेटर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए भी और वैसे भी। तो यस, तो there are some resources for learning, and first of all that is ETL ड्रोन मॉड्यूल, तो आपको ड्रोन जो एम की वेबसाइट पे भी है, तो आपको वहां से समझने को मिलेगा कि ड्रोन एक्चुअली कैसे बनता है, क्या कंपोनेंट्स है, तो आपको एक बिगिनिंग के लिए काफी यूजफुल होगा वो। दूसरा ऑब्वियसली यू कैन कम ऑन आवर वेबसाइट, तो वो मोस्टली रिसोर्सेज अवेलेबल है। Then there are some books online as well about understanding drones as well. And we have also launched one of the book recently about drones, so you can check out that as well. And even there are more resources, online courses, and YouTube. There are immense amount of YouTube videos available. Um, like everybody is sharing those videos, so you can check out those as well. Uh, yeah. So now, what kind of drone ideas you can work on, particularly on this school innovation marathon? So these are only some of the ideas which I could quite think of. And there are many more, but yeah, these one I like a little more. So you can work on those, or maybe you have any other idea, you can share it with us here now, or you can come to us if you want some uh, brainstorming, if that works or not, about the feasibility and the. So one is obviously environment monitoring, where you can use drones to monitor the pollution, or the pollution हो गया, या फिर कुछ और जो भी ह्यूमिडिटी कैसी है, इवन टेम्परेचर एट डिफरेंट हाइट ऑफ द हाइट्स, राइट, एल्टीट्यूड्स, वो आप देख सकते हो। दूसरा ये काफी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि मैं कार चलाता हूँ, तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग उससे काफी एक्चुअली फ्यूचर में ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है विच विल बी यूजफुल इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, कि हाँ किधर ज्यादा ट्रैफिक, हाउ हाउ दे कैन रूट द ट्रैफिक। जो अभी जनरली होता है कि पता एक छोटा एक्सीडेंट की वजह से पूरा मतलब तो 1-2 किलोमीटर का भी होता है जो ट्रैफिक अटक जाता है, तो वो ड्रोन से आप पहले पता लग कि हाँ कहाँ पे इशू है, तो आप कैसे रीराउट कर सकते हो ट्रैफिक को। तो ये इवन गवर्नमेंट एजेंसी के लिए मेजरली काफी यूजफुल हो सकता है फ्यूचर में। तो ये वन ऑफ द कि हाँ कितने दूर तक मेरा ट्रैफिक है, वो बता सकते हो। वाइल्ड लाइफ में कि हाँ इवन काउंटिंग ऑफ द, अगर कोई नेशनल वो है, सॉरी, तो उसमें पता लगा सके कि हाँ कितने जानवर है, कितने मेरे शेर है, किस तरफ टाइगर जा रहा है, तो वो आप ड्रोन से वगैरह से डिटेक्ट कर सकते हो, तो कैमरा से। देन फायर ड्रोन, ये कहीं पे फायर, तो एक आइडिया देने के लिए कि हाँ वहाँ पे कितनी आग लगी है, वो ड्रोन उसके लिए यूजफुल हो सकता है। और अगर
आग उससे बुझा सकते हैं तो और भी अच्छी बात, राइट। फिर पुलिस से रिलेटेड तो सर्विलेंस हो गया, पुलिस से रिलेटेड, या फिर हो सकता है किसी कोई अच्छा कोई मेला वगैरह लगा है तो वहां पे डिटेक्ट करना है कि कहीं पे कुछ मतलब कोई झगड़ा वगड़ा टाइप का नहीं हो रहा है, तो उस तरह का डिटेक्शन, वो मतलब और भी हो सकता है, पर ये वन ऑफ द आइडिया। देन गार्बेज डिटेक्शन है, जिनकी मैं कहीं पे मैं इन वन ऑफ द स्टेट आई फ्लाई द ड्रोन एंड डिटेक्ट कि हाँ यहाँ पे कहाँ पे लोग ज्यादा कचरा फैला रहे हैं वहां से, या फिर पर्टिकुलर कुछ और आप डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट जा सकते हो। फिर वन ऑफ द मीथेन मीथेन गैस वाला हो गया। और आप इवन ड्रोन्स को यूज कर सकते हो कि मैं कैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस के समझा सकूं एजुकेशन के लिए, कि हाँ कैसे प्रेशर के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा, सॉरी अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उस तरह के। या फिर मैं कैसे ड्रोन को यूज करूँ कि मैं सोलर सिस्टम के बारे में समझा दूँ, मतलब उस तरह भी आप सोच सकते हो कि हाँ। वो भी आई गेस सुमन कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो भी इट आल्सो कम्स अंडर सेम, राइट? कि हाँ। Yeah, and actually same में there is a different its theme called as others. उसमें अगर आपको कोई भी थीम, अगर कोई भी थीम में नहीं बैठता है, you can actually हाँ, define your own problem statement and make a project run. ओके, तो easy. ओके, हाँ, करेक्ट। बट आई थिंक वन ऑफ द थीम वाज अबाउट द एजुकेशन एज वेल, राइट? तो उसमें भी इट फिट्स कि हमें कैसे ड्रोन्स पे यूज करके अच्छे से कॉन्सेप्ट, बिकॉज पहले होता है जैसे मैं जब 12th में पढ़ा था, मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मोटर कैसे काम करती है, एक्चुअली काम कैसे करती है। पर बाद में अपन को बहुत सारे अभी तरीके आ गए हैं कि हाँ कोई एआर वाला हो गया वर्जन, कोई कैसे समझा रहा है, तो वो व्यू देख पा रहे हैं, या फिर रियल मोटर अपन देख पाते हैं तो समझते हैं। तो उसी वजह से कि कुछ और कॉन्सेप्ट्स हो फिजिक्स के, साइंस के, स्पेस के, जो अपन कवर कर सकते हैं, तो वो काफी यूजफुल होगा। यस, सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड, एंड you and if you have any question, just shoot it. There are many, I many. Like oh, there have been okay. many crazy questions. There have been very simple questions. Uh, so yeah, students, like if you have any questions, please keep on posting them in the chat box. So like one of the questions that has come is ki, what can you tell a little bit about the different type? We can stop screen sharing. I will request all the students to quickly take a screenshot of the screen. Like you can visit the website and you can also contact on the number provided for any support needed later on also. So one of the very important questions that has come is that can you share a little bit light about what is the flight controller, what is a remote, or should we use a phone or should we use anything else for drones? Okay. Yeah, so flight controller is mainly brain of your drone. Like without it, your drone won't fly. You might have seen some of the videos in YouTube where people are just powering four motors and saying cheapest drone. And but if we will just scroll to at the end of the video, you will see it's not flying. So and it can't fly because of the science itself. Because the drone, the motor and the propeller provide the thrust, but if they can't correct it, so you correct, you change the voltage of each motor while flying, and that's not easy actually। वो चारों मोटर का आप बार बार पोटेंशियोमीटर से आप कंट्रोल कर रहे हो कि वोल्टेज कम ज्यादा, क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। तो वो उसी के लिए फ्लाइट कंट्रोलर बना है कि फ्लाइट कंट्रोलर हैव सम सेंसर्स ऑन बोर्ड, लाइक एक्सेलरो, जायरो। लाइक एक्सेलरो, जायरो इज वेरी बेसिक, देन मैग्नेटो एंड बैरोमीटर एज वेल। तो उसमें क्या है कि अगर ड्रोन हल्का सा भी 1 डिग्री भी टिल्ट हुआ, तो वो फ्लाइट कंट्रोल सेंसर्स की यूज से प्रोसेस करके बताया कि हाँ 1 डिग्री रोल हो गया है। तो उसके बाद वो मोटर्स को डायरेक्ट करता है कि हाँ तुम इधर वाली मोटर कम हो जाओ, इधर वाली मोटर बढ़ जाओ, ताकि मैं बैलेंस कर सकूं। तो उनका टारगेट होता है कि मैं, उनका पर्पस होता है कि मैं 0 डिग्री मेंटेन करूं। like if I am just hovering is like flying at just one place, right? तो अगर मैं ड्रोन को, so एक सिंपल सा कि ये अगर मेरा फ्रंट है तो दिस मोशन इज कॉल्ड पिच, पिच फॉरवर्ड, पिच बैकवर्ड, रोल राइट, रोल लेफ्ट। तो अगर मेरा थोड़ा कुछ किसी भी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, जैसे कि हवा चल रहा है या फिर कुछ भी वजह से मेरा ये खुद से
घूम जाता है। अगर ये फ्लाइट कंट्रोलर नहीं होगा तो क्या है, हमेशा थ्रस्ट ऊपर दे रही है, राइट। अगर ये हल्का सा टिल्ट हो गया तो इसका एक कंपोनेंट मेरे को इसको और घुमाने को मजबूर कर देगा, राइट। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों ने सीखा होगा तो अगर ये थ्रस्ट है, इसको थोड़ा टेढ़ा हो तो एक इसको फिर तो क्या है, ये पूरा टिल्ट हो जाएगा। तो पर इसी के लिए फ्लाइट कंट्रोल, तो फ्लाइट कंट्रोल क्या है, 1 डिग्री भी अगर होता है तो वो बता देता है और मोटर्स को बोलता है कि भाई तुम अपना आरपीएम चेंज करो, तो वो सीधा कर देता है। अभी क्वाडकॉप्टर ही क्यों, one of the reason कि quadcopter is kind of a actually stable configuration. There are bicopter as well, then helicopter, then tricopter. पर उनमें क्या है कि हर एक में किसी में वन ऑफ द मैकेनिकल चीज पे मतलब डिपेंडेंसी काफी होती है। जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर में अगर वो देखा हो आपने तो उसका एक्चुअली पिच चेंज होता है, जो ब्लेड्स होती है वो फिक्स नहीं होती है, तो ब्लेड का पिच वगैरह ये एंगल होता है वो चेंज होता रहता है टू गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो वो मैकेनिकल फेलियर के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर अगेन बाइकॉप्टर में भी वो थ्रस्ट वेक्टरिंग होती है, जो मतलब इनको ही मूव करना पड़ता है। देन ट्राइकॉप्टर में भी वन ऑफ द मैकेनिकल थिंग है। क्वाडकॉप्टर इज वन ऑफ द थिंग कि जिसमें आपको मैकेनिकल कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली मोटर इज मैकेनिकल पर वो तो सब में कॉमन है। पर इनका इनका आरपीएम चेंज करने के लिए जस्ट इलेक्ट्रॉनिकली हैपनिंग, you are not dependent on mechanical things which are there to sometimes failure। तो वो इसलिए क्वाडकॉप्टर ज्यादा फेमस होते हैं। फिर आपको अगर सेम ही कॉन्फ़िगरेशन में और भी ज्यादा पेलोड एंड वो रिक्वायर है तो फिर आप वो हेक्साकॉप्टर जाते हैं, ऑक्टाकॉप्टर जाते हैं। इवन आजकल तो देयर आर पावरफुल मोटर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन वेयर देयर आर 4 मोटर्स अपसाइड एंड 4 मोटर डाउनवर्ड, तो उसे कोएक्सियल मोटर्स बोलते हैं। तो दैट इज देयर, तो उसको आप वो ज्यादा और भी पेलोड क्वाडकॉप्टर में ही ज्यादा पेलोड का प्रोवाइड कर। आई थिंक दोस टू वर मेंशन, राइट। Yeah, and like you mentioned about the book, so there is a comment about the book that you like. Can you little bit know, let them know, or put the book in front if possible? They wanted to know which book, Yes. and Yeah, so so that they can actually. this is the one of the book we recently launched actually, drone technology for beginners. It has the basics about the what drones work, how drones work, what are the physics behind that, what are the important components of the drone, right? And a little about the Pluto at the end as well, कि उसको कैसे assemble कर सकते हैं, how you can, what are the things you can do on with the drones. So we have also explained about some of the applications as well which they can do. So it's called drone technology for beginners. It's then on our website and Amazon as well. So you can, and you can, Thank you. I guess you can find more on online resources as well. But yeah, this is one of the our contribution for this. Thank you, thank you, thank you. That will help a lot. Last two, three set of questions I think we have. Like the Yeah. questions are keep on rolling one by one. I'll try to pick some of the common ones. Yeah. One of the very important questions that is coming is that like my flight time is generally low, and so that is because my battery is getting low. So are there any tips to increase the flight time or any battery that can actually increase the flight time for a longer duration? Okay. So that's is one word answer is not there for this कि आप ये बैटरी यूज कर लो बहुत हो जाएगा। इट्स बिकॉज आई थिंक इनिशियली भी जब डिस्कस करते हो, इट्स डिपेंड ऑन द propulsion system and the propulsion system include the motor, battery and the propeller। तो सेम मोटर में आप कैसे दो बड़ा प्रोपेलर अगर लगा सकते हो और सेम बैटरी है तो भी फ्लाइट कर सकते हो। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो वी वी हैव यूज्ड वन ऑफ द वी हैव एक और कॉन्फ़िगरेशन भी है कि इसमें जो प्रोपेलर छोटा है, अभी 55 mm है, जिसमें हमने 110 mm का यूज किया। बट पर मोटर उतना सपोर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हमने गियर से स्टेप अप किया। तो वो गियर लगा के किया तो सेम बैटरी के साथ इवन वेट भी बढ़ गया, ड्रोन का भी वेट बढ़ गया, पर पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ गया। तो जैसे ही अगर विदाउट एक्स्ट्रा पेलोड की बात करें तो इट फ्लाइज फॉर लाइक 9 मिनट्स, तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ दैट ड्रोन फ्लाई फॉर अराउंड 11 मिनट्स। तो पर हाँ, यहाँ ड्रोन्स में वही प्रॉब्लम है कि ये डिस्चार्ज करंट काफी ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से ना जो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ कितने घंटे उड़ेगा वो। घंटे बहुत बहुत फाइट के बाद अगर किसी ने कोई लोग पहुंचे भी है ना तो बहुत
फाइट के बाद पहुंचे, तो वो होल मोटर कैसा है, मोटर के बाद प्रोपेलर कैसा है, वो तो उस पे बहुत डिपेंडेंट है। Thank you, thank you. This will help a lot. And one more is coming from scientific Srinivas sir. So he's telling like, do let me know, like, is there any flight controller that I can link with my obstacle avoiding part of my robot, so that when moving, a drone can avoid trees. Otherwise, it generally just crashes under the tree. Yeah, so there are flight controllers जिसमें so he want to add the sorry, obstacle He wants avoidance to add feature, right? obstacle avoiding in his drone itself, so that because I think he's unable to fly the drone without like dodging the trees. So there are So, different ways you can add the obstacle avoidance feature. So जनरली सबसे सिंपलेस्ट कुड बी है आईआर सेंसर, कि हाँ आईआर सेंसर में अगर कुछ डिटेक्ट किया तो यू कैन प्रोग्राम द ड्रोन टू मूव ऑन द अदर साइड, राइट? देन पीपल यूज अल्ट्रासोनिक सेंसर्स एज वेल, जो थोड़ा ज्यादा बेटर होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं, राइट? देन कम्स अभी जो लोग यूज कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन विजन। सो कैमरा के बेस पे कि हाँ वो डेप्थ डिफाइन कर सकते हैं, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आया है तो वो ऑब्वियसली उसके लिए प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चाहिए। तो ये तीन वेज है। अगेन व्हाट काइंड ऑफ ड्रोन ही ऑलरेडी हैव, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। तो जनरली प्रोग्रामेबल अगर फ्लाइट कंट्रोलर्स में बात करूँ तो वन ऑफ द फॉर द बिगर ड्रोन्स आर, एक एपीएम का आता है, एक पिक्सोक का आता है। पिक्सोक इज लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जो भी आप ड्रोन फ्लाइंग एग्रीकल्चर या दूसरे जो बिल्ड करे हुए ड्रोन्स में देखोगे तो पिक्सोक जनरली लोग यूज करते हैं। देन अगर छोटे ड्रोन्स में है तो वी हैव दिस प्राइमस एक्स जो हमारा, तो दिस इज प्रोग्रामेबल एंड मॉड्यूलर, तो आप इसमें आईआर सेंसर वगैरह वो सब भी आप ऐड कर and सकते हैं। how they can get it, like if you can just share like the Primus X. That's on our website, dronaviation.com. So they can purchase the each component as well if they don't want the whole drone kit. It Okay, comes as a DIY, so you can assemble it. पर हाँ, thank you. अलग से फ्लाइट कंट्रोलर भी खुद का ट्राई करके कुछ और अलग, अगर अलग मोटर है वो ट्राई करनी है, नया प्रोपेलर ट्राई कर, तो मॉड्यूलरिटी Thank you, इज thank you. देयर। This is another very unique question. So I think this is coming from the recent SpaceX launch that happened. जिसमें वो ओके, the वापस rocket आ came गए। back to the drone. Can we have a return to home feature in a drone too? And is it Yes, available in yes, US yes. too? Because that works on GPS, and generally the bigger drones have that feature. क्योंकि while taking off, it measures कि मेरा लोकेशन क्या है, मेरा घर कौन सा था, तो उसके कोऑर्डिनेट्स द ड्रोन है। देन वो फ्लाई करता है, अगर जैसे वन ऑफ द फीचर कि हाँ मैं या इधर में जस्ट प्रेस करूँ कि रिटर्न टू होम, तो वो अपने आप ही उस लोकेशन पे आ जाता है। या फिर मेरी बैटरी कम हो गई तो भी उस लोकेशन पे आ जाएगा, या फिर मेरा मैनुअल कंट्रोल से सिग्नल चला गया कुछ रीजन की वजह से, तो भी उसमें, तो ये सेफ्टी फीचर्स उसमें उसी वजह से होता है। तो रिटर्न टू होम इज देयर ऑन मोस्ट ऑफ द बिगर ड्रोन, बट ऑब्वियसली इट शुड कैरी अ जीपीएस मॉड्यूल। तो वो हमेशा अपना ड्रोन अपना लोकेशन पता करता रहेगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसे होम पता है तो कहीं पे भी जा सकता है। इवन कि हम उसे कमांड भी दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा। ड्रोन डिलीवरी भी वैसे ही हो रही है बिकॉज दे आर नॉट फ्लाइंग मैनुअली, दे जस्ट गिव द जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, तो वो फिर उस कोऑर्डिनेट पे टारगेट और वहां पे डिफाइन करके वहां पे जाने की ट्राई कर। Thanks a lot. I hope like it answered your question. So the next question, last two questions we'll take as we are already out of time. ओके, We had planned it only for 30, 40 minutes, but due to the amazing questions coming in the chat, like we are still extending. Uh, one of the thing is like what are the new kind of technologies that are coming in this space of drones, in the sector of drones? Like what are the latest 1, 2 years, and like can students use it to build on something? So one of the thing is most of the technology coming on based on vision actually. So जो मैंने पहले बोला, there's something called SLAM, simultaneous localization and mapping. उससे क्या है कि वो based on camera itself, the drone can autonomously move around in a closed space as well. So because of that, it can be used for uh, like for a मतलब आर्मी के लोगों के द्वारा यूज करा जा सकता है, जैसे ताज पे जैसे अटैक हुआ था। तो अगर वो कंटिन्यूअसली अपना खुद का, क्योंकि अंदर कैसे जाना है वो उनको नहीं पता है रास्ता, मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर देम इज लाइक अननोन थिंग्स, राइट? पहले से नहीं पता होता है कि
आगे कौन सा कमरा है, ये कौन सा कमरा है, और तो उनको नहीं पता है तो मतलब ड्रोन को भी नहीं पता है। तो वो ड्रोन पूरा प्रॉपर जा सकता है, ताकि अगर कोई बीच में ऑब्स्टिकल भी आए तो उसको अवॉइड वगैरह कर सकता है। और सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली जो अभी मेजर बूम पे है, द टू लेटर वर्ड इज एआई। तो तो वो दैट इंटीग्रेशन ऑन ड्रोन्स विल ओपन immense amount of application, like अगेन मैं डिफरेंस की बात करूंगा, अगर जो है हाँ वो कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करता रहेगा कि हाँ ये किस तरह का बंदा है, उसकी एक्सप्रेशन कैसा है, तो उस पर डिटेक्ट करके बता सकता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा सही नहीं है या फिर टेररिस्ट है, राइट। And also, इवन I think you in the medical field also, like I was recently, I imagine कि वो एक nano drones का concept है which goes into your like in the for a surgery. There are nanobots which go and do surgery. Similarly, there are nano या drones. I heard about that, yeah. Yeah, so amazing. Like there are many applications that the students can actually build on. Like the sky is the limit, or drone के लिए तो sky भी limit नहीं है actually. उससे भी Correct, ऊपर है. correct. Drone is out of space. Yeah, and now coming to the last question, I kept this for the last, which is the Dinesh. According, you might have seen so many projects. I remember the first drone that I built was I learned from you itself, like under your guidance. So till now, based on your experience, what would you say? What is the one or two most uniquest projects built by students, not only school, college students, or any startups in the space of drones? Like very unique problem that no one has thought of. So idea-wise, this methane was different for me. So it's a simple, but it's a different thought-wise बिल्कुल अलग था कि अरे ये भी हो सकता है, इस तरह से भी कुछ यूजफुल कर सकते हैं सोसाइटी के लिए. So that was one of the thing. And then I think one project was not related to us, but I saw it somewhere. It's about charging of the drone itself, where I can just send the drone to and remote location है, वहाँ पे क्या चार्जिंग के लिए मेरे को ड्रोन को वापस थोड़ी बुलाना, अगर वो कुछ ऐसा सर्विलेंस वगैरह कर रहा है तो वो ऑटो चार्जिंग, लाइक वन ऑफ द आइडिया वाज टू जस्ट पर्च ऑन द इलेक्ट्रिक वायर एंड चार्ज इट इटसेल्फ, या फिर एक दूसरा और आइडिया था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा है मैंने, पर आइडिया वाज टू कि ड्रोन कुड हैव सम सोलर पैनल्स, ऑब्वियसली एफिशिएंसी वो सब देखना पड़ेगा, पर वो सोलर पैनल्स वो ओपन करे और खुद को वहीं पे चार्ज करे और फिर आगे चला जाए। तो मतलब कि इट्स काइंड ऑफ अ बर्ड इटसेल्फ व्हिच इज गोइंग जस्ट फॉर फॉर indefinite टाइम, इट्स आउट ऑफ योर होम एंड कुछ तो कर रहा है. Yeah, thanks a lot, Dinesh. Like, yeah, amazing insights. Like, got to learn a lot from you today. Like, I Yeah. believe like we can like collaborate for future sessions also, maybe for all the students. Yes, yes, Like definitely. We can have amazing more projects. Yeah, mentoring sessions as well. yeah. If people come out with some ideas, we तो can आज सब work कुछ तो on एक साथ them. हो गया, but थोड़ा करके भी we Ah, can. correct, correct. We can choose some of the points and just work, or maybe we can discuss on some ideas with the students itself, as students and Yeah, teachers. If they have some idea, we can discuss about their feasibility, and then maybe we can guide. And if something comes out, it will be really good. sure. So great. So students, I hope that you have on all the teachers and mentors also. I hope you all have got like we have seeing the appreciation coming out in the comments. So thank you very much. Like I hope you have learned a little bit about drones. Like we just wanted to, we did not want to do a full session, but at least a session in which you get excited that you can actually build projects on drones in marathon as Yes, well. There are numerous themes. You can create your own theme. You can define your own problem statement. Just that it try to be a little bit unique. Don't try to make the same things that are already in the correct, market available. Try to like not only the engineer, even the scientist inside you should come out. So because correct, that will help you to create the winning project for marathon. And you know that there are amazing prizes to be won. Like every top team will actually get 1.5 lakhs of funding to actually upgrade their project. They'll be getting internships and all. So there are amazing opportunities for you. And and we just need participation from you. Like you know the method, it's available on the School Innovation Marathon website. For video tutorials, they're available on the YouTube channel. This video will be always available on the YouTube channel if you want to come back and refer to the important concept that Dinesh just said. So thank you, Dinesh. We are very grateful for you on behalf of Atal Innovation Mission Niti Aayog for helping us and all the teachers and students and mentors with the valuable guidance related to drone related projects. Any last parting thoughts from your end for the students? I think that will be there. That
just keep innovating. It could be a small innovation as well. Just don't think कि ये कुछ बड़ा नहीं हो रहा है. Just जो भी idea आ रहा है, just I just keep repeating one of the phrase with even Pluto as well कि open to experiment. मतलब थोड़ा भी हो कि हाँ मैं कुछ हल्का सा ऐड जो क्योंकि वो छोटा छोटा ही ऐड होके एक बड़ा इनोवेशन बनता है. मतलब अभी स्पेस एक्स की बात हो रही है तो उसने डायरेक्ट नहीं सोचा था कि है ना जो मैं डायरेक्ट आके रॉकेट फिर से आ जाएगा. फर्स्ट आई माइट हैव जस्ट थिंक कि हाँ पहले रॉकेट उड़े तो सही, राइट. फिर बाकी चीजों पे तो वैसे कि छोटा छोटा इनोवेशन इट कुड बी मतलब फनी फॉर अदर्स, बट हाँ इट कुड बी सिंपल एडिशन जो. और जनरली वो होता है कि वो छोटा इनोवेशन आपको खुद को भी स्पार्क करता है कि हाँ मैं अभी इससे आगे क्या करूँ, एंड इट कुड बी a spark for others as well. So just keep innovating, just keep flying, and drones have a future. So just think of it. And बहुत सारे मतलब ड्रोन अभी इतना सा भी मतलब 5% भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है ड्रोन के एप्लीकेशन. और मैं सिर्फ अच्छे वाली एप्लीकेशन डिस्ट्रक्टिव वाली नहीं पर यूजफुल एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ. वो भी मतलब 5% भी नहीं हुई है इतनी. तो वो काफी फ्यूचर है. तो और वो थोड़े थोड़े इनोवेशन से ही पता लगता रहे. तो just keep innovating, keep Thank you, experimenting. Dinesh. Thank you. Thank you very, very much. These words mean a lot, and I hope the students will be coming up with amazing projects this year around. So, on behalf of Atal Innovation Mission, Niti Ayog, again, I would like to thank you, Dinesh, for sparing your valuable time in guiding all the students. So, all the best, students. So, have a good, great weekend ahead. I hope and wish you all the best for the competitions. Keep innovating, keep trying, keep experimenting, keep failing. But just Yeah. keep on learning something new each and every day. So you have the tools, you have the things, resources are there. We are here to help for anything needed. So yeah, so we'll connect very soon. Let's the next session is also geared up to be very, very exciting, just like this one. So please stay tuned. Please keep on subscribing, like the video, and yeah, we'll meet you in the next session. Thank you very much, everyone. Okay. Right.